or something. तो आइडिया ये है कि खासकर कोविड के सिचुएशन में, जो कल भी हम लोगों ने बात की कि इतनी जो सारे भारत की वल्नरेबल पॉपुलेशंस हैं, चाहे वो माइग्रेंट वर्कर हैं, कैजुअल लेबर हैं, वेंडर्स हैं, ट्रांसजेंडर हैं, छोटे किसान हैं, छोटे मछुआरे हैं, छोटे पशुपालक हैं, all of these are currently, because of the lockdown, not so much because of COVID, but because of the economic lockdown, I mean the whole lockdown, that these livelihoods have got very seriously affected. So we're talking about maybe 200, 300, 400 million people. और दूसरा ये भी है कि कई लाख लोग जो हैं वापस अपने घर गए हैं, because they no longer have jobs in the cities or in the industrial areas, and they've gone back. Most of them don't know what they're going to do. They don't know if they have a job back in the city, or even if they want to go back to the city. But अगर गांव में भी रह गए या छोटे कस्बे में भी रह गए तो क्या करेंगे, वो भी एक बहुत बड़ा सवाल है. तो इस माहौल में हमें लग रहा था कि एक ऐसा नेटवर्किंग, और इसके साथ में ये भी हो रहा था कि विकल्प संगम को भी कुछ ऐसे सवाल लोगों द्वारा आए जा रहे थे कि हमारे गांव में इतने लोग वापस आ गए हैं या हमारे क्षेत्र में, और हम वहाँ पे एक एनजीओ हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी आजीविका के लिए हम क्या कर सकते हैं? What are the livelihood options? Are there any ideas? So out of this kind of situation and these sorts of questions, what we thought is that it's very important to try and see if we can have a national level networking process, जिसमें कि जो लोग ऑलरेडी इस प्रकार के लाइवलीहुड्स या इस प्रकार के लोकल इकोनॉमिक रिवाइटलाइजेशन में इन्वॉल्व रहे हैं, जिसकी वजह से द कम्युनिटी हैज बिकम मच मोर रेजिलिएंट. And in the Vikalp Varta process, we have seen many examples. For instance, Deccan Development Society women telling us that they have no food problems. In fact, they are feeding the landless or feeding the community, the municipality workers, etc., from the food that they're producing. We've heard Subhatatai and Satish Bhau talking about how, at least in some places in the villages, they're much more resilient because they have been able to claim the rights to the forest. And also generate some resources from the economic resources from the forests, जिससे वो जो migrant workers वापस आए हैं उनको मदद कर रहे हैं, etc. So there are a number of examples of this kind which are already available. Goonj folks, Meenakshi and Anshu told us about how in many of the states where they are working, also this kind of resilience, because of the activities that have been happening from the past, has helped people to cope with the crisis. So इश्यू ये है कि इस प्रकार का कम्युनिटी मोबिलाइजेशन और जगह पे किस तरह से हो सकता है, और उसको बढ़ाने के लिए हम क्या एज अ विकल्प संगम नेटवर्क क्या कर सकते हैं. सो बेसिकली द आइडिया इज कि एक सूत्र, मतलब एक धागे की तरह अगर हम लोग बनते हैं, जिसमें कि जहाँ पे इस प्रकार की एक्टिविटीज ऑलरेडी चल रही हैं और जहाँ पे नहीं चल रही हैं लेकिन लोग करना चाह रहे हैं, इनको एक तरह से बांधना, to have more ability to exchange experiences and to exchange what should I say, actual practical lessons, to exchange the how to do something kind of thing, what are the problems that come up, to exchange information and ideas about government schemes that can be applied. NREGS का जैसे MKSS के लोगों ने कई बार emphasize किया है कि how can that be extended even more, how can that be ensured. NREGS को अर्बन एरियाज में कैसा लाया जा सकता है, उसकी एडवोकेसी भी हो सकती है. FRA, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, पेसा, ये सारे जो कानून हैं जो लोगों की मदद के लिए होने चाहिए बट यूजुअली डोंट गेट यूज्ड, हाउ कैन दोस बी यूज्ड इवन मोर. एंड आल्सो कम्युनिटी मोबिलाइजेशन एंड सेल्फ गवर्नेंस इटसेल्फ एंड सेल्फ हेल्प. तो ये आइडिया है. 3 मेजर फोकस एरियाज आर व्हाट हैज बीन डिस्कस्ड सो फार. अभी तक प्रक्रिया ये रही है कि हम में से कुछ लोगों ने और नेटवर्क से संपर्क किया, जिसमें से कुछ आज होंगे शायद, आई एम श्योर. फॉर इंस्टेंस, देयर इज अ नेटवर्क कॉल्ड कोस्ट, व्हिच इज कम्युनिटी और कोविड एक्शन सपोर्ट टीम, जिसमें करीब 150-200 संस्थाएं या संगठन हैं देश भर में. दे हैव बीन रिस्पॉन्डिंग एट अ नेशनल लेवल टू द क्राइसिस ऑफ माइग्रेंट लेबर एंड कैजुअल लेबर एंड सो ऑन. Similarly, there's another one called RCRC, which is Rapid Community Response to COVID. I don't know if Jagdish or somebody is on the call today, but they have also, there's about 8 or 10 organizations that have been doing this. There are migrant workers help networks. There are Makam and so on have also. So many of the organizations, Goonj, have actually been already involved with doing
essential relief work. Yesterday we heard from a number of you about this. How do we, and they're all thinking about how do we transform from this also into looking at livelihoods issues as a long-term response, not just the immediate relief. So 3 major focus areas came up in the discussions we've had so far with these networks, which are very preliminary discussions. Nothing has yet been decided. Number 1, sustaining, creating, generating dignified livelihoods. और ये हर सेक्टर में हो सकता है. Of course, the traditional sectors of farming, pastoralism, fisheries, crafts, etc., but also non-traditional sectors, small-scale manufacturing, ecotourism, वगैरह जो है, या नए प्रकार के crafts and small industries, etc. So and also services. तो इसमें हर जगह पे और खासकर गांवों में या स्मॉल टाउन्स में इस तरह के डिग्निफाइड लाइवलीहुड्स किस तरह से उत्पन्न हो सकते हैं. That's number 1 focus. Second focus, which people felt was important, and we have to decide whether we want to take that up or not, is the rights and entitlements of workers. क्योंकि काफी सारे workers वापस आने वाले हैं cities में या industrial zone में. तो how do they get a more secure employment right now, because the employment in 90% of the people, the employment in these sectors is extremely insecure. तो वो secure employment, उसके क्या rights, क्या entitlements, उसमें एक idea ये भी आया, स्टैन वगैरह ने दिया कि जिस गांव से माइग्रेंट वर्कर्स बाहर जाते हैं उसी जगह पे या घर पे उसी wherever they are right now, उसी जगह पे कुछ इस तरह का mobilization या group form हो ताकि right from there itself they can be starting to advocate their rights and not only after they go to their workplace. और तीसरा है कि इस सब को लेते हुए एक localized, self-reliant, circular economy जैसा है उस प्रकार, और non-monetized economy, exchange of and economy of caring and sharing जो है वो भी हम और ज़्यादा कैसे बढ़ा सकते हैं, so that dependence on the external market or the external government and corporations and so on becomes much less, and you also then challenge the domination of the state and the corporations. तो ये 3 मुख्य focus areas हैं, and we would try and do that through much more exchange amongst these organizations and institutions and communities, especially community level exchange, much more communications amongst them, much more trying to link them through various ways, much more generation of stories, films, case studies, lessons from all of these things that can be communicated in different ways. तो ये मुख्य idea है अभी, and so far it's all completely voluntary. It's still only an idea. We have a meeting tomorrow with many of the major networks, so if any of you wants to join, please, we'll send you the link. And if people agree that we need something like this, if people also feel कि ऐसा already कुछ हो नहीं रहा है और होने की ज़रूरत है, तो फिर विकल्प सूत्र को लॉन्च किया जा सकता है. और उसका क्या स्ट्रक्चर होगा, क्या प्रोसेस होगा, उसमें रिसोर्सिंग कैसे होगा, अभी तक सारा वॉलंटरीली हो रहा है, तो क्या रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी जिसमें कि 1-2 लोग या कुछ लोग फुल टाइम हों, ये सारे सवाल अभी भी सोचने की ज़रूरत है. और जब स्मॉल वर्किंग ग्रुप होगा तो मुझे लगता है कि उसमें हम लोग और ज़्यादा चर्चा कर सकते हैं. Min, Juhi, Srishti, some of you have been part of this, so if I've missed out on something. मैं सिर्फ एक चीज ऐड करना चाहूंगी कि ये हम इस तरीके से भी सोच रहे हैं कि ये सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन लेवल तक ना हो, बट यदि हम कुछ एक्शन बेस्ड काम भी कर पाएं किसी के लिए, तो मे बी नॉट हम एज अ वर्किंग ग्रुप, बट हम लोग फैसिलिटेट कर पाएं कि कोई, जैसे कम्युनिटी ने हमको रीच किया. एज एग्जाम्पल अभी खेती विरासत मिशन ने हमें ईमेल लिखा था आफ्टर आशीष इंट्रोड्यूस्ड विकल्प सूत्रा टू ऑल ऑफ यू कि हम लोग की एक प्रोजेक्ट है और हमें इसमें मदद चाहिए. तो इट वाज अ डायरेक्ट अपील कि क्या विकल्प सूत्रा का ग्रुप ऐसी प्रक्रियाओं में जुड़ेगा. उधर एज अ इंस्टेंट रिस्पॉन्स, क्योंकि उनको कुछ क्राफ्ट बेस्ड आइडियाज चाहिए थे, तो बिकॉज आई वाज अवेलेबल मैंने उनको कुछ डायरेक्शंस दिए. लेकिन आगे यदि उन्हें जाना है तो फिर हम उनको कनेक्ट कर सकते हैं और क्राफ्ट ग्रुप्स के साथ जिन्होंने सिमिलर एक्टिविटीज की हों. तो ये एक जरूरी पार्ट होता है जहाँ फिर वो एक्शन बेस्ड भी हो जाए, नहीं कि सिर्फ हम कुछ डॉक्यूमेंटेशंस और स्टोरीज शेयर कर पाए.
सो इट्स गोइंग टू द नेक्स्ट स्टेप जहाँ नेटवर्क से वो एक्शन हो जाए, और यदि एक कलेक्टिव एक्शन हो जाता है देन वी कैन एक्चुअली शो इट as a collective change process for a bigger you know policy or a bigger movement to come out for a specific space. तो ये भी एक चीज है जो अभी तो नहीं कर पाएंगे, बट जैसे क्योंकि मेरा इसमें जुड़ना, जब आशीष ने पहली बार ये आइडिया हम कुछ लोगों से डिस्कस किया, इसीलिए था कि ये जरूरी है कि एक कलेक्टिव एक्शन ग्रुप भी बने फॉर स्पेसिफिक फोकस एरियाज. तो दिस कुड बी द नेक्स्ट स्टेप, नेटवर्क फॉर्म करने के बाद, लिंकेजेस फॉर्म करने के बाद. तो ये भी एक लॉन्ग टर्म एस्पेक्ट है कि ना कि सिर्फ कोविड या इस पैंडेमिक को डील करने के लिए, लेकिन बट इसको आगे बढ़ाने के लिए. एक तो ये कि हम लोगों का ये विचार है कि जब ऐसी कोई बड़ी विपदा आती है दुनिया में, तो it also creates an opportunity to bring about large scale change. So can this COVID pandemic crisis be leveraged to create or transform our society with the values that we all hold so dear for so many years? So in terms of equity, justice, in terms of reviving local economies, in terms of creating livelihood opportunities which are which create more sustainable development while preserving the ecology and natural resources which are so precious, while addressing climate change and so on. And that is one. Second is during our work at Coast, we noticed there were so many young people who came forward. जो लोग आगे आए, जिन्होंने वो सब चीजें की जो हम सोच भी नहीं सकते. तो क्या हम उसको उन लोगों को आगे बढ़ा सकते हैं to see how they can contribute to this crisis and going forward to rehabilitation and a new way of looking things. तीसरी चीज जो आई थिंक पहले से बोल दी गई है शायद, लेकिन एक बार मैं और बोलना चाहूंगा कि ऐसा मैंने तो कभी नहीं देखा मेरे 15 साल के एक्सपीरियंस में कि इतने सारे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस आपस में काम कर रहे हैं. देयर इज अ लेवल ऑफ ट्रस्ट, देयर इज अ लेवल ऑफ स्पिरिट ऑफ कोलैबोरेशन. क्या हम इसको भी यूज कर सकते हैं टू क्रिएट अ कॉमन विजन एंड टू कोलैबोरेट बेटर? I also wanted to ask if we can elaborate on the difference, probably some people might have that question, between Vikalp Sutra and Vikalp Sangam. So क्योंकि हम ये सवाल पहले भी आया है, तो इसको जस्ट अगर आप लोग में से कोई एक थोड़ा elaborate कर दें. The way I see it is कि विकल्प सूत्र, विकल्प संगम जो है वो एक ओवरऑल अम्ब्रेला है जिसमें कि बहुत सारी चीजें होती हैं या हो सकती हैं. ये विकल्प सूत्र का एक, शायद उसका एक सब पार्ट, ऑफ कोर्स अ वेरी बिग सब पार्ट है कि ये लाइवलीहुड्स और लोकल इकोनॉमीज पे फोकस्ड है, जिसमें ये सारी चीजें आती हैं. लेकिन जैसे मान लीजिए अगर हम एक हेल्थ संगम करते हैं या आर्ट संगम करते हैं या इस प्रकार के अलग अलग चीजें, the rights of LGBTQ for instance are not necessarily linked to the revitalization or the sustenance of livelihoods. Of course there's a big overlap, ये तो बिल्कुल है, लेकिन विकल्प संगम में और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो शायद जरूरी नहीं है कि इसी पे फोकस्ड हो. अगर मान लीजिए एक कंजर्वेशन पे, कम्युनिटी बेस्ड कंजर्वेशन पे एक विकल्प संगम होता है, या जैसे लद्दाख के का या कश्मीर का हम लोगों ने जो स्टेटमेंट किया, वो पॉलिटिकल इश्यूज का जो स्टेटमेंट किया, that goes well beyond the issue of livelihoods etc., which is what Vikalp Sutra would be. And plus it will be like Juhi said, very heavily focused on action on the ground. इसका मतलब ये नहीं कि विकल्प संगम खुद एक्शन करेगा, लेकिन वो स्टिम्युलेट कैसे हो और ज्यादा कोलैबोरेटिव एक्शंस कैसे हो on the ground for livelihoods. So I would say that's the difference. पॉलिसी वाला पॉलिसी मान लो बायोडाइवर्सिटी एंड लाइवलीहुड पे अपने को देश को प्लान देना है, तो वो विकल्प संगम का हिस्सा होगा या विकल्प सूत्र का हिस्सा होगा, क्योंकि उसमें लाइवलीहुड भी है और मैक्रो
पर्सपेक्टिव भी है, तो उस पे आशीष या आप बताएं। मुझे लगता है कि दोनों की जरूरत पड़ेगी उसमें। जहाँ पे भी क्रॉस कटिंग इश्यू है जो लाइवलीहुड से संपर्क लेता है, तो ऑब्वियसली संगम के दूसरे हिस्से जो हैं या संगम के साथ बाकी जो नेटवर्क्स जुड़े हुए हैं उनको भी फिर साथ लेना होगा या हमें उनका साथ देना होगा. So at that point where there is a cross connection to be made, I think Sangam is exactly the sort of platform where those cross connections can and should be made. विकल्प संगम के बैनर से वो करेंगे अपन. हाँ, वो तो उस वक्त तय हो सकता है कि बिल्कुल. और ये मतलब विजय जी, शायद मुझे लगता है कि बैनर्स का उतना वो नहीं है जितना कि अगर विकल्प सूत्र को हम एक खाली प्रक्रिया मानते हैं, एक संस्था नहीं है, बैनर नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन एक खाली जोड़ने वाली प्रक्रिया है, then it's seen a little differently from विकल्प संगम का तो एक आइडेंटिटी बन गया है, शायद एक थोड़ा सा लगता भी है कि कुछ एक नेटवर्क है. The sutra, at least the way I'm thinking of it, is purely a process. Yeah. And this is very important because जैसे कोस्ट है, RCRC है, इतने सारी अलग अलग नेटवर्क्स, संगठन, संस्था हैं, उनको ये नहीं लगना चाहिए कि ये ऊपर एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर बन गया है और ये विकल्प सूत्र जो है वो ऊपर से आ रहा है कहीं से. But it becomes a horizontal way of just connecting. Self-appointed polite interlocutor between these kinds of networks. We should note those words down. सृष्टि, Recording can चल I रहा make a comment? Recording हो रही है. Joy का भी एक comment आया था, but I don't know whether he wants to say it. And then Joy, you wanted to. No, not exactly the same way, but I wanted to make two comments. One is that, I mean, whatever explanation which is given is quite good, and you are opening up a different front to address some of the specific issues within the broader umbrella of Vikalpa Sangam. Now, only issue is that, I mean, this we have discussed in the larger Sangams and the core groups and type of things, that Vikalpa Sangam has got certain core values. Especially in present day times, I would like to emphasize issues like communalism and various other type of things. And there are these 5 pillars, all those 5 pillars or whatever you call. So I think one of the things to be sensitive to is that whoever new groups of people who are involved in livelihood activities who are going to be part of Vikalpa Sutra, I think probably one should be sensitive to know who joins and who doesn't join. I think that type of a thing need to be applied. I'm just saying as a word of caution and things. The second part, which I thought I wrote to Ashish, was that, okay, now I think the focus of this particular group is on alternative livelihoods and other type of thing. I think, I don't know, I mean, we also need to take a realistic call, the type of millions of people are coming back to the rural landscape and what's happening there, right from caste tensions to a whole lot of other tensions which are happening, certain communities are being targeted there, their business opportunities have been taken away because they have been stigmatized, saying that they are the ones who have brought, COVID and things. So there's a larger social, realities which is unfolding in the rural areas, resource issues, all type of things. So within that larger context, I think we need to be able to place this initiative and how far, what are the limits of this type of initiative. I think we should be sensitive to that. And also seeing that, okay, today it's a pandemic of this type, tomorrow is going to be something else. There are other type of, climate crisis related issues, which is going to be, I mean, the whole issue of uncertainties with which we need to live and in which livelihoods are going to be placed. So I think probably we can also maybe address some of those issues related to, disaster issues and other things, and have some type of a network of people, what people are thinking about it, working with the social activists on some of these crucial issues. So maybe we can expand this network. I'm not saying that we can do everything from this particular, Vikalpa Sutras and this one, but I think probably these are also issues going to be there in the rural landscape as going to come. So keeping that as a background, and whether we can also address some of these issues, that's what my concern. Yeah. Can I address this, what Joy has just told us? Yeah. So Joy, it's absolutely right that these issues will come up. What I think with the Sutra process, the idea is that these issues should come to us from groups that are probably facing it, so that we can then be that link to help them find the right link, facilitator or group or organization that will help them to address this issue. So we need to be aware of the various
different kinds of challenges that can come forward, and have certain data with us in terms of facilitators, maybe a database of policies, etc., with us to be able to give that information for action, rather than just keep speaking that this is an issue, this is an issue. But if it is an issue, what can be done with that issue is probably where this process will be more robust in its function. I personally feel very strongly that we need to actually bring our focus back to sustainable development, sustainable livelihood. If we move into all kind of directions, while there are already very strong networks on issue of, let's say, LGBT or issues of communalism, we can join in there. But if we start saying we will hold this and we'll hold that, this might get weakened, while this is so central today to our concerns about the environment, about the livelihood related to organic agriculture and revitalization of all these forces around us. So I am not of the opinion that we say, okay, if somebody comes up and says, let's have LGBT, there are already number of networks that are talking, doing their webinars, their Zoom calls. So why don't we bring our focus back, totally concentrated, and show some results in this area? Yeah, okay. Just a brief response to that, Abaji, which is that there are ongoing processes which are not necessarily focusing on this. For instance, Nachiket has proposed, and hopefully it will come up soon, Vikalp Sangam on data and so on, which he mentioned yesterday. I don't know if Ritu and others who are planning a health one is not necessarily only or predominantly focused on livelihoods. Of course, there's a huge connection, and so on. So I think we can't get away from the fact that there are, or for instance, urban sustainability issues are not, again, necessarily to do with only livelihoods. There are lots of ecological issues that the Sangam deals with, which are not necessarily only to do with livelihoods. So I think we can't negate those processes. Maybe we don't want to take on any new subjects, but जो already subjects हैं हमारे और चल रही हैं प्रक्रियाएं, उनको हम वो नहीं कर सकते, मतलब बंद या मना नहीं कर सकते मेरे ख्याल से, करना भी नहीं चाहिए. Without contradicting Ashish, contradicting you or contesting your position, जो आभा जी कह रही हैं वो हमारा सेंट्रल कंसर्न तो रहेगा ही दोनों में, बिल्कुल, और वो है ही, तो वो भूलना नहीं है. इट्स ए गुड रिमाइंडर एंड वी हैव टू रिमाइंड आवरसेल्फ. और उसके लिए कॉन्क्रीट मैक्रो लेवल का भी, नॉट जस्ट द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स, उसमें जैसे कल मैंने पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट सुझाया था, वैसे ही साइंस, टेक्नोलॉजी और डेमोक्रेसी का जो नचिकेत कह रहे हैं डेटा वाली बात, वो उसी लार्जर रूब्रिक का हिस्सा है. साइंस, टेक्नोलॉजी और डेमोक्रेसी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे कैसे डिक्टेटोरियल टेंडेंसीज को लाएगी, सेंट्रलाइजिंग को लाएगी, तो उस पे भी हमको एक कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ अमंग्स्ट ऑल ऑफ अस, वो दूसरी चीज जरूरी है. तीसरी जो ओपनिंग अप स्पेसेस है वो कितना बड़ा है नहीं मालूम. जैसे कमलनाथ वाज मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स इंडस्ट्री टाइप्स, तो मध्य प्रदेश in any case there was not much space, but in Rajasthan, in Chhattisgarh, in Kerala, in many ways there are spaces for building up sustainable livelihoods which are nature dependent. तो उनके लिए, और आदिवासी, कल हमने अपनी बातों में लिखा कि एक गोल डाइवर्सिटी करने वाला है, तो वो डाइवर्सिटी में आदिवासी दलित का अलग डायनामिक, दोनों मार्जिनल हैं पर दोनों का डायनामिक टू ब्रिंग ऑन बोर्ड डिफरेंट है. एक आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का है, उसमें हिस्ट्री को कैसे ओन करना है, लार्जर सोसाइटी को, दलित्स वाले सवाल पे. लेकिन आदिवासी सवाल पे उनको ऑन बोर्ड लेने के लिए जो हमारे सवाल हैं सस्टेनेबिलिटी और लाइवलीहुड्स के और इकोलॉजी के, उस रेडिकल इकोलॉजी के, उन सवालों से उसको जोड़ने की बात है.
तो उसको हमें जल्दी लेना चाहिए फ्यूचर प्रोग्राम में, कि कैसे आदिवासी को थ्रू देयर कल्चरल आइडेंटिटी एंड लाइवलीहुड टुगेदर एज वन होलसम यूनिट कैसे ऑन बोर्ड लेंगे. With our discussions, everyone's agreed, because that was one of the most important aspects, that we should go ahead with the sutra process. There's a lot for us to structure in a space where do we stick to specifically the rural issues, or do we open out into even the urban issues that are coming up. There was a lot of discussion around the migrants, and definitely a focus on livelihoods should be the ground area that we should look at, and then all the other peripheral challenges that come with it. That's basically the gist of what we could get to. We had people like Shubhranshu, Meenakshi, Suhastai, etc. explain things that are happening on the ground right now, which could also work for us to add on to the sutra process or take forward as good ideas, like the mobile radio, which we got to know is different from the community radio system. Goonj as a network can be great facilitators and support groups for other groups that are coming in and asking for any format of facilitation. So looking at continuing this dialogue, maybe tomorrow when we have the sutra discussion with the other groups that we've invited. There are obviously a lot of other issues connected to this, because livelihoods, dignified livelihoods, connects to all other aspects of life. The issue of political economy, self-governance, self-governance bodies, so more radical democracy, the issue of ownership over the means of production, the commons versus privatization, how do you deal with issues of local inequalities if there is self-governance? So those sorts of things are obviously connected to this. The question of how much the sutra process itself should take on, and how much it should be engaging with other, for instance, trade unions and others who are, or informal workers unions, rather than trying to do everything, but kind of just linking up so that the work gets further enhanced and enlarged, and what kind of advocacy it could do. So these are all questions right now. People have ideas, but I think over the next few days, when we're discussing with other networks and groups also, we can get a clearer idea of what would be the limits of the sutras process itself, and how do we link with others who are doing other things so that we can bring in all these different aspects. I don't know whether you mentioned also that it was mentioned that disaster. Oh yeah, that was Vikalp Sangam and Sutra, but in particular, should also be looking at the issue of disasters, disaster preparedness. This is a comment that Joy had also made in an earlier email to me. Which the Sutra and then maybe the larger Sangam process should also be looking at the issue of disasters, because we are facing them all the time and many more are coming. Yeah. And how to bring in the local administration also into this process, which will make it probably faster for us for implementation of programs. Yeah, so we're still structuring it, but these are the main key areas of focus that we have brought together, and now we'll have to sift through what will be our main ways of moving forward, keeping the others as our peripheral ideas and issues to deal with.